Minimal in comparison. Good, good. Oh. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल chirocrackss में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरो प्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सभी कायरो प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रेंट बिंडर। Okay, very consistent left to right. Not a whole lot of decreases. Right here at the bottom over top of the sacrum, it's warmer than here in the lumbar spine. And then this is all very consistent in the lumbar thoracic. Very, very top with just mild increase in heat up here. These muscles are working harder up here in your shoulders. Then your sacrum has a good deal of increased temperature as well. Okay, but nice and consistent moisture through the skin. I don't feel any excessive moisture here. There's no excessive dryness either. That's good. Those are things that are pretty common actually with Lyme patients. All right, so I'm going to push a little bit deeper into the spine. Good, okay, relax. Okay, that increased the difference. Now I'm going to bend your knees. Try not to help me. Right short stays short, so that points to the left SI joint as well. Okay, so right now we're really looking at the left SI joint. Okay, I'm going to push down into your hips. Do you have any pain, discomfort, tension here? Yeah. How about here? Minimal in comparison. Okay, L5 here. Not really. 4 here. 3 here. Not really. Underneath your hips here like this. Good. Okay, let me pick up your hip. Don't let me do it. Or don't help me. Still have that discomfort, tenderness. Oh yeah. Did it get worse? I don't feel like worse, but like it's still there. Okay. All right, we're gonna let you sink in on the blocks for a minute. Tender. How about this side? Which one worse? I think the left, yeah. Very close though. Okay, we're gonna work out the trap fiber tension here. The trapezius is a big muscle, comes all the way down here to the bottom of the thoracic spine, all the way up to the top of your head. Oh my gosh. All the way up to the top of your cervical spine, and it attaches here to the occiput, all the way out here to the end of the clavicle.
Much better? Okay, I'm gonna remove the blocks. Alright, I'm gonna pop this up here like this. Is this a birthmark? That's a burn. Okay. Over a birthmark. Yeah, it's crazy. Burn. Okay, left inside calf. Okay, that's interesting. Okay, this is how we adjust the low back if you got this one. Mm-hmm. Alright, so I'm gonna stretch your shoulders up in this direction. I'm gonna bring your hips down like this, and then we're gonna push in that like that, okay? Okay, deep breath in and out. Good, good. Oh. Okay, nice and gentle. Good, we're gonna adjust the L5 here on the right. Okay, so you're doing good. I'm gonna bring your hips down, same thing. Let's do that one more time in. Good, and out. Good, shoulders relaxed. Okay, there's more, hold on. Lay your back. That was deep. Shoulders relaxed. Good. Let's get your right side adjusted now. Same thing, just following your breath. Just let your shoulders relax. Am I dropping this way? No. Just let me do it. You don't have to. I was. All you have to do. All you have to do is breathe. Good testing first. Oh yeah, this is all on the lower spine. 7, 6, 5, 4. Good, letting us relax. Just one more test. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, we're gonna go all the way at the bottom. Breathing, just following your breath. Okay, I'm gonna adjust your ankle. I'm gonna pull it down in this direction. Oh. One more. Good. Oh. Good. Okay, you're gonna squeeze my fist in between your knees. Go ahead and squeeze. Ow. That's good. That was your pubic bone. Right, so we're gonna start. I'm gonna pull you forward here like this. Okay, so this is a full spine adjustment. I'm gonna use this towel. You okay with this like that? Mm-hmm. All right, we're gonna use this around here like this. All right, and I'm gonna follow your breath as you breathe out. We're gonna pull in this direction, and at the end we give a little pull. Okay? Okay. Okay, let's give it a try. Go take a deep breath in. Now. Oh wow. I don't know how to describe how that feels like. Mm-hmm. It hurts so good. Yep. That's good. We're feeling it, Mr. Krabs up here. Mm-hmm. But wow. We're doing the thing. Yeah, wow. Yeah, it feels good. I feel like a lot in here, but unless that's just all of like the pressures from it shifting. Yeah, that's okay to feel it up there. That part of your spine doesn't move very often.
Okay. And there's a lot of stagnation in the ligaments and the muscles and the Yeah. joints. So we just moved stuff that has never moved before. Yep. Yeah, we did. I'm kind of curious if that pop that I was telling you about could even happen. Try it. It won't work. Mm-hmm. This is the wrist that hurts, right? Yeah. Back against my hips, or excuse me, against my hand. Good. Push hard as you can. Push. Oh! Let this relax. Let your hands relax. Okay, I'm gonna reach around the front here, Jade, like this. Lean forward. Good. We're gonna just pull this up. Forward. आगे हैं हमारे साथ डॉक्टर हरीश ग्रोवर। के देखो जी टाइटनेस बता दीजिए। यहाँ पे खिंचाव थोड़ा देखो, टच करवा लियो बिना खिंचाव के। हाँ, या पैरों में। नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। हाँ, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। बैठ के देखो, लाती मार के ऐसे क्रॉस लेग करके ऐसे मोशन लगाइए। और जिन स्पेनिंग्स की टाइट है, अदरवाइज मुझे लगता है बैलेंस्ड है। बैलेंस है। वो बहुत गैस है, बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग है गैस के चक्कर में। यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, ये नहीं होनी चाहिए। पूरा टाइट हो गया, पूरा टाइट हो गया बिल्कुल। ये भरा भरा मतलब ऊपर लगता है खाना ऊपर आ रहा है ना, ऐसे इसकी वजह से ये ब्लैंक हो जाती है। अच्छा गैस अभी आप दबाते रहेंगे, इनकी आंखें पलक नहीं खाती हैं, बहुत ठंड जाती है, जबकि तो बहुत ज़्यादा। इससे एक तो क्या होता है कि खाने का मन नहीं करेगा और वज़न बहुत रैपिडली बढ़ता रहता है। ये पूरा टाइट हो गया गैस की वजह से। देखो ऐसे करना, सांस लेना, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। ये हम नेवल ऑस्टियोपैथी कर रहे हैं, ठीक है। राइट वाले घुटने को मोड़ो जरा, सीधा कर दो, फिर से मोड़ो, सीधा कर दो। ये पूरी ऐसे यहाँ पे पूरी गैस बनी ये गैस में मेरे सब पेट में पेट प्रॉपर इतना नहीं दबा सकती नहीं उसमें हड्डियाँ नहीं। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। बैठ के देखो, सांस लेके देखो। नीचे पाँव रखाओ। अब देखो ब्लोटिंग कम होगी, सांस बहुत अच्छे से है। आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि निकल गया, हल्का हो गया।
बॉडी लाइन भी कर देता हूँ। ये टाइट लगता है, ये वाला इससे दर्द होता है, इससे ढीला छोड़ो, इसको छोड़ो। शोल्डर भी करेंगे। शोल्डर ब्लेड में कहाँ है? पीछे की तरफ, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, नोट्स पॉइंट दिया मुझे जाइए। इस वाले को भी करते हैं। दोनों शोल्डर ही जाम हो गए थे आपके एक्चुअली, दोनों में अटक थी। अभी जब बैठना होती है तो स्टैप्लोथोरैसिक जॉइंट है, घिस के चलता है, कड़क 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 बजता है। मोबिलिटी कम हो जाती है। मोबिलिटी कम हो जाती है, यस। कड़क 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 बजता है। उल्टा लेटे करो, बढ़िया साफ है। सांस है, छोड़े, छोड़े, ऐसे पकड़िए जरा, माथे पर से पकड़ लीजिए, लॉक लगा दीजिए दोनों। दर्द बताइएगा कहाँ पे आता है? दर्द आ रहा है इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ढीला छोड़ो, सांस को छोड़ो जी, यस, इससे सांस को छोड़ो, नीचे हाथ कर लीजिए, सांस को छोड़ो, सांस को छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक होता है, ठीक है, ये सब सांस है, छोड़ा, छोड़ा, फिर से दोनों, छोड़ो, फिर से ले, छोड़ो, छोड़ो, इसमें से कोई पॉइंट घुसता है यहाँ पे, इसमें नहीं घुसता कोई भी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इनके से दर्द करते हैं, लेग्स दर्द करते हैं, ये जितने वो मसल्स हैं ये दर्द करते हैं, पिंडली सारी दर्द करते हैं, पिंडली बहुत टाइट है। हाथ को दर्द होता है यहाँ पे, हाँ ऐसा लगता है कोई दबा देंगे, हाँ ब्लड फ्लो कम आता है, सर्कुलेशन कम आता है, फटीग हो जाता है मसल जल्दी। प्रॉब्लम राइट में ही ज़्यादा है, C6 C7 के अराउंड। सांस लें, छोड़ें 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 छोड़ें,
कर लें, सांस लें, छोड़ें। गीला छोड़ दें, सांस लें, छोड़ें। लूज कर दो जी। हिप्स पे से खिंचाव आया, यहाँ से चटका लगा। सांस लो, छोड़ो। ऐसा ही जॉइंट करेंगे इनको पक्का। छोड़ दो इसको। यस। अब L3 L4 को ये ट्रस्ट करेंगे इनको। कंट्रोल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रस्ट होता है बेसिकली। लूज कर दो, लूज कर दो, लूज। सांस लो, छोड़ो। एक हम करेंगे लंबो साइकिल लोअर सेगमेंट। ढीला ढीला ढीला, सांस लो, छोड़ो। ज़्यादा लूज करो। सांस लो, छोड़ो। नीज ठीक है आपके? नीज ठीक है? नो नीज। इसमें से आवाज आती है। इसमें सबकी आवाज। इसको बेंड करो, इसको बेंड करो। सांस लो, छोड़ो। सीधा कर दो इसको, सीधा कर दो। सांस लो, छोड़ो। और उठने दो। लूज करो, लूज करो, लूज लूज लूज। सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सीधा करो इस पाँव को। बराबर नजर आ रहा है, उल्टा करो। इतने चेक करते हैं, उल्टा करो। हाथ नीचे करो प्लीज। थोड़ा सा फर्क रहेगा। सीधा छोड़ दो। सांस लो, छोड़ो। अब बराबर। बैठो जी। नेक की मोबिलिटी चेक कर लेता हूँ। लेफ्ट राइट में घुमा के देखिए कौन सा तरफ रिस्ट्रिक्शंस लगता है। थोड़ी थोड़ी आवाज आती इस है। तरफ लेफ्ट में राइट में दोनों साइड आती है। दोनों तरफ आती है। चलिए छोड़िए, लूज कर देंगे। सांस लो, छोड़ो। सामने देखिए, गीला छोड़ो। आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, सामने देखो बस। सांस लो,
सांस देखो अच्छे से आ रहा है क्या? चलो, रुक के देखो जी, टाइटनेस को बता दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।